पिक्चर जो 50 बरस पहले बनी थी, आज तक वो स्टैंड अप कॉमेडी में उसके डायलॉग यूज़ होते हैं, दूसरी फिल्मों में उसके रेफरेंस होते हैं, लैंग्वेज इवन इन पॉलिटिकल स्पीचेस वो यूज़ किया जाता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो how and why it has happened, I mean, what is charisma? There is no definition of charisma. It happens and then you try to reason it out, find some rationale or logic in it, but I think it is beyond it. And it is a most wonderful experience for all of us whoever participated in that film, Sholay. Yeah, that is why it is celebrating 50 years. Nah? So it's a very joyful moment for all of us. All of us who've seen Sholay while growing up have been influenced by it, you know, on a subconscious level only. Yeah. I think our love for mainstream movies came from our love for Sholay. And its performances, very rarely do films come along where you remember every single character, down to a guy who says one line. You know, you remember the name of that person. It's very, very rare something like that happens. So it's now become a part of our collective consciousness only. शोले मैंने हॉल में 14 बार देखी है. What? 14? हाँ, और पहली बार मैंने देखी थी, मैं बच्चा था तब, और पहली बार मैंने देखी थी प्रोजेक्टर रूम में बैठ के. Oh wow. So that is, मेरे फादर की प्रिंटिंग प्रेस थी, तो हमारे पिक्चर हॉल की टिकटें छपती थी, तो उनके साथ चला जाता था, 2 बजे ले जाते थे, तो प्रोजेक्टर रूम में विंडो पे बैठा देते थे. मैंने तो एक ही बार देखी है, बट मेरे फादर बहुत बड़े फैन थे उसके, तो आई रिमेम्बर तब कैसेट का ऑफ कोर्स ज़माना होता था, तो हमारे घर में शोले की कैसेट होती थी, ऑडियो कैसेट, जो कि बेइंतहा सुनी है. And Asrani ji, I think I just, and then it was wonderful to get to work with him in Permanent Roommates later on, but I thought exceptional. It's बहुत ही एक perfectly wholesome मामला है ये फिल्म, है ना, सब भी कुछ है उसमें. These are emotions. These are not films anymore. Yeah. These are emotions. You play it today also in any theater. Don't have to get any. If with all due respect, अगर आप कोई interview भी ना करो, अब तो सारे वो दिग्गज actors हैं, it's gonna be massive. There is no chance. I think it was re-released and we all watched.